न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन दे दो मेरे, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब को। नहीं करना चाहते सर, गलत ऑर्डर सही। ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिए। ऑर्डर है सर, नहीं सुनेंगे आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। 2000 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने सर? 2011 का है, 2011 का रूल बताइए सर। मेरे निवेदन सर, उसमें सर बैकडोर एंट्री सर जो आपने सर लिखा दिया है सर, ये तो हमारे अगेंस्ट आएगा, क्योंकि सर ये बैकडोर एंट्री नहीं है सर, ये सरकार के आदेश में काम कर रहे हैं सर। मैंने क्या लिखा है इसको पढ़िएगा, उसके बाद में प्लीज। आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये उम्मत सर, ये इनके लिए सर अलग पॉलिसी है रेगुलाइजेशन की सर, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई सर। उम्मत एबी का जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। ठीक चलिए सर, गलत ऑर्डर सही। ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिए। सर ये उमा देवी के सर जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। सर इनकी पॉलिसी अलग है, उसके अकॉर्डिंग सर ये सबका नियमितीकरण हो चुका है ऑलरेडी सर। नेक्स्ट केस सर, कम से कम जो मैंने दस्तावेज लगाया सर उनको तो कंसीडर करके सर ऑर्डर लिखा है, भले ही आपने खारिज किया है, पर कम से कम सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए सर विकास मिश्रा, दिस इज नॉट द वे। Whatever you are. सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर। कौन से आर्गुमेंट को आपके कंसीडर नहीं किया गया है सर? मैंने सर जो रूल्स है सर, जो 2011 का ऑर्डर सर, वो बैकडोर। कौन सा रूल्स लगाया? चलिए, बैकडोर एंट्री नहीं सर। एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल लगाया आपने? 2000 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने सर? 2011 का 2011 का रूल बताइए सर। 2011 आप ऑर्डर है, रूल पढ़िए आप सर। 2011 का जो ऑर्डर है सर। नहीं सुनेंगे आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। डायरेक्शन देते सर, मेरे केस कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं, ऐसा नहीं था डायरेक्शन। इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर, क्या मतलब सर? न्याय के लिए सर यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है सर। खारिज भी करिए सर, रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर। मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर। न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन दे दो मेरे, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब को। नहीं करना चाहते आप वहां लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिएगा। आप क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है, आपको कितनी बहस आती है, कितनी करते हैं आप, सब लिखाया जाता है। नहीं सर, नहीं लिखा जाता ना सर। ठीक है, उसमें एक ही और लिखिएगा, सुन के जाइए। श्री विकास मिश्रा सबमिट्स दैट case law laid down by Supreme Court in Uma Devi will not be applicable and case of the petitioners is required to be considered in terms of the rules of 2011. Full stop. He is requested to bring on, but to point out from the record that what are the provisions contained in the rules of 2011. Full stop. बताइए 2011 के रूल्स में क्या लिखा है? सर बता रहा हूँ, जो ऑर्डर सर ऑर्डर नहीं, रूल्स आपने वर्ड यूज किया है। नियमितीकरण का सर जो ऑर्डर हुआ सर 2011 में, रूल्स बताइए सर। मैं देख लीजिए सर, 2011 का जो ऑर्डर है सर, इसमें सर सबका नियमितीकरण हुआ सर। ये हुआ होगा, लिखिए। सभी लोगों का हुआ सर, हमारा भी हुआ सर। He could not point out any rules in this behalf. Full stop. Regularization is to be made. रिप्लाई बुलाना चाहिए सर। Regularization is to be made in terms of the vacancies. Full stop. CMO has categorically mentioned that no posts for ST category were available for regularization of the petitioners. Full stop. This aspect has not been challenged by the petitioner. Full stop. In fact, petitioner has not challenged the order dated 14/3/21/3/2018 passed by the CMO, which is part of the return filed in the earlier writ petition. नंबर डाल लीजिएगा, जिसमें कॉल साहब का ऑर्डर है उसका नंबर डाल लीजिएगा, WP नंबर इतना। Full stop. Once it has come on record that posts were not available, then rehorsed the vacancy position. Petitioner could not have claimed regularization. Full stop. Law in this regard is laid down in case of Uma Devi, and law laid down by Supreme Court is binding on all the subordinate, all the high courts and the subordinate courts. Therefore, the submission of Shri Vikas Mishra that law laid down by Supreme Court in Uma Devi is not applicable to the fact is contrary to the provisions contained in Article 141 and 142 of the Constitution, which makes it obligatory on the High Court to accept the law laid down by Supreme Court and apply it in its letter and spirit. Next, as far as it's section Article 141 and 142, 141. Next, as far as plea of
non-regularization is and non-enforcement of orders of the coordinate bench is concerned, petitioner's remedy is elsewhere. Full stop. It is clarified that coordinate bench had directed for consideration of petitioner's representation in terms of GAD circular dated 7/10/2016, and that circular, as discussed above, does not deal with regularization but only regulating the service conditions of daily wages. Full stop. Despite this, learned counsel is using loose language in the court, which is unbecoming of a officer of the court. Without taking further cognizance of his misconduct, petition, the original order is maintained.